do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. That as Chairman of the Federal Republic Service Commission, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. In accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law. And always in the interest and solidarity of the integrity, well-being and prosperity of Pakistan. And always in the interest of the solidarity, integrity, well-being and prosperity of Pakistan. That I will not allow my personal interests to influence my official conduct. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, and that in the performance of my functions. Or my official decisions, and that in the performance of my functions. Whether in the selection of person, recruitment or appointment, or in any other way, I will act without fear or favor, affection or ill will. Whether in the selection of persons for the recruitment or appointment, or in any other way, I will act without fear or favor, affection or ill will. May Almighty Allah help and guide. May Almighty Allah help and guide me. Ameen. Ameen. Thank you. ईवान सदर में चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तकरीब हल्फ बर्दारी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवासती ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्फ उठा लिया है और सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जनरल अख्तर नवासती से चेयरमैन FPSC का हल्फ लिया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवासती ने चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हल्फ ले लिया है। ये तकरीब ईवान सदर में मुनक़िद हुई और आसिफ अली जरदारी की जानिब से हल्फ लिया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन से हल्फ लिया है।